Hello बच्चों, let's read the question. The question says that simplify the following fractions a minus c upon 1 plus ac plus c upon 1 minus c into a minus c upon 1 plus ac minus a minus c upon 1 minus ac upon 1 minus a into a minus c upon 1 minus ac divided by a upon c minus c upon a. फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट. फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे हमारा? टेक एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शंस देन जस्ट सॉल्व द इक्वेशंस. अब इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास a माइनस सी अपॉन 1 प्लस ए सी प्लस सी अपॉन 1 minus c into a minus c upon 1 plus ac minus a minus c upon 1 minus ac upon 1 minus a into a minus c upon 1 minus ac divided by a upon c minus c upon a. So from here first of all take LCM which is equal to, firstly LCM क्या आएगा हमारे पास? इट इज 1 plus ac a minus c plus c into 1 plus ac upon, now LCM here is 1 plus ac and 1 into 1 plus ac minus c into a minus c, and next minus 1 minus ac into a minus c, so it is minus a plus c upon 1 minus ac upon LCM यहाँ पर क्या आएगा? 1 minus ac, so it becomes 1 into 1 minus ac minus a into a minus c whole term divided by a upon c minus c upon a. So from here it is equal to a minus c plus c plus ac square upon 1 plus ac upon 1 plus ac minus c into a plus c square upon 1 plus ac, then minus a minus a square c, then next term minus a plus c upon 1 minus ac upon 1 minus ac minus a square plus a into c upon 1 minus ac divided by a upon c minus c upon a. So from here it is equal to c के साथ c कैंसिल आउट हो जाएगा and here a कैंसिल आउट हो जाएगा and 1 plus ac के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा and here 1 minus ac के साथ remaining terms are a plus a into c square upon 1 ac minus ca के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. remaining term is 1 plus c square minus c minus a square c upon 1 माइनस ए सी प्लस ए सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग टर्म इज 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर टेक एलसीएम सो इट इज सी इंटू ए, न्यूमरेटर बिकम्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल टू टेक एलसीएम अगेन हियर. सो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? इट इज 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर. न्यूमरेटर बिकम्स ए प्लस ए इंटू सी स्क्वायर into 1 minus a square minus c minus a square c as it is into 1 plus c square divided by a square minus c square upon c into a. So from here it is equal to a की मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल 1 minus a square के साथ करेंगे. So from here it is a minus a cube, then प्लस ए सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर के साथ प्लस ए सी स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर
into minus a square, so it is minus a cube c square. Then next term c के multiply first of all 1 plus c square के साथ, so it becomes c plus c cube, so it is minus c and minus c cube हो जाएगा, sign change due to minus. Then next minus a square c, it becomes plus a square c. Then next minus a square c cube, it becomes plus a square c cube upon 1 plus c square into 1 minus a square divided by a square minus c square upon c into a, which is equal to, first of all take a cube common, so terms क्या है a cube वाली, minus a cube and minus a cube c square. So from here take a cube common, remaining terms are minus a cube common ले लेते हैं हम, so it becomes 1 plus c square. Similarly next take minus c cube common, so minus c cube into 1 minus a square. Next take a common from a plus a into c square, so it is a into 1 plus c square. Then next take minus c common, so minus c into 1 minus a square upon 1 plus c square into 1 minus a square divided by a square minus c square upon c into a. So from here it is equal to, now take 1 plus c square common, so terms क्या है, it is 1 plus c square into a minus a cube. Then similarly next take 1 minus a square common into minus c cube minus c upon 1 plus c square into 1 minus a square divided by a square minus c square upon c into a. So from here डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू a minus a cube, it can be written as a into 1 minus a square upon 1 plus c square into 1 minus a square. Then next plus 1 minus a square into, take minus c common, so minus c into 1 plus c square upon 1 plus c square into 1 minus a square divided by a square minus c square upon c into a. So from here it is equal to 1 plus c square into 1 minus a square cancel out हो जाएगा. Similarly यहाँ पर 1 minus a square into 1 plus c square इस टर्म के साथ cancel out हो जाएगा. Remaining terms are a minus c. Next divided का sign change हो जाएगा, so it becomes multiply. Then terms reciprocal हो जाएंगे, it is ac upon a square minus c square. So from here it is equal to a minus c into ac upon a square minus c square. It can be written as a minus c into a plus c. आइडेंटिटी का यूज किया हमने यहाँ पर, it is a minus b into a plus b, which is equal to a square minus b square. So from here a minus c cancel out हो जाएगा. Remaining terms are ac upon a plus c, which is our final answer. I hope you all understand it well. Best of luck.